So this is the project credit card fraud detection. This is the home page, about page, the details of the project, and these are the key features. The technology stack we have used is React.js for the front end, Node.js for the back end, and Flask and scikit-learn, which is for the machine learning model. And for the database, we have used MongoDB. And this is the about page, an overview of the platform. The research result means the precision and accuracy and F1 score of the model. These are the performance metrics. Let's do the registration. और रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है. Let's do the login. And this is the UI. So मैं आपको एक बार UI एक्सप्लेन कर देता हूँ. सो यहाँ पर हमें ट्रांजैक्शन डिटेल्स डालनी है. सो जो सबसे पहले हमें दिख रहा है, ये टाइम इन सेकेंड्स है, जो कि बताता है कि ट्रांजैक्शन कब हुआ है सेकंड्स के फॉर्म में. एंड द सेकंड इनपुट इज अमाउंट, दैट अमाउंट ट्रांजैक्शन की पेमेंट वैल्यू को शो करता है. एंड जो नीचे पीसीए कंपोनेंट से V1 to V28 जो कि फिलहाल 0 है, ये पीसीए बेस्ड एनोनिमाइज्ड न्यूमेरिकल फीचर्स है, जो ओरिजिनल सेंसिटिव बैंकिंग डिटेल्स को हाइड करते हैं, जो कि सिर्फ इंपॉर्टेंट बिहेवियर पैटर्न्स को प्रिजर्व करते हैं. इन हिडन पैटर्न्स की हेल्प से मशीन लर्निंग मॉडल अनयूजुअल एक्टिविटी को समझकर एक्यूरेटली डिसाइड करता है कि ट्रांजैक्शन फ्रॉडलेंट है या लेजिटिमेट है. सो ये जो डेटा होता है, ये टोटली जो हमारा जो हमें क्रेडिट कार्ड सर्विस प्रोवाइड करता है या जो हमारी बैंक होती है, ये डिटेल्स उनके पास होती है. और इस डिटेल्स को हम डायरेक्टली शो नहीं कर सकते. सो हम इसे एक पर्टिकुलर फॉर्म में रिडक्शन करते हैं इसका. एंड उसके बाद हम इसे शो करते हैं, जिससे कि ये डेटा मीन्स लीक ना हो ड्यू टू द प्राइवेसी रीजंस. सो लेट्स गिव द टाइम इन सेकेंड्स एंड अमाउंट. एंड ये ऑप्शनल तो नहीं है, लेकिन हम इन्हें 0 रख सकते हैं, या फिर इनकी वैल्यू होती है 0.11 in points probable, negative, positive, which is also in dataset. We can see that these are these values. So let's predict, and this is the fraud probability, and the prediction is that this transaction is legitimate. Okay, and these are the user details. So this was all about the project.